Okay, good morning, students. Uh, Now tell me, if I want to give here field name, it is number, and the field name is roll number. Now tell me, maximum character I can insert in the field name. Maximum character. No. But I here it depend on the version to version. It is saying ki, in your book it is I think 64. Check it. It is back exercise question. ठीक है और 255 is the maximum number of fields. Bani, listen. 255 is the maximum number of fields in which we can in a table we can create. And 64 is the maximum length of the field. Clear? Next is shortcut key for exit the access. Control plus F4. Sorry, Alt plus F4. Okay, Alt plus F4. Next is shortcut key to save the table and close it. No. Control plus W. Good. Then next is name another two DBMS softwares. Another RDBMS or DBMS softwares. There is a one problem in also in the revision test. You write only SQL. ठीक है? Basically, आपके पास होना चाहिए था. मैं I'm writing there here. Access तो है ही है. ठीक है? Then Oracle, Sybase, okay. Then MySQL, then MS stand for Microsoft SQL Server. Then beta DBMS and RDBMS both are same thing is there. Okay. Then if we take the example of take the one software from open source, that is Base. कैसे हम लिखेंगे openoffice.org base. हाँ, openoffice dot ये dot हो गया. .org. It stands for org base. So these are DBMS and also RDBMS, because here we can create the different tables and can set the relationship. जो हमने previous lecture में discuss किया था कैसे relationship बनाते हैं. ठीक है? तो here is these are RDBMS softwares. Next. How many views in a design view? The different. So how many views are there? Datasheet view and design. In design view, window is divided into how many parts? 2 parts. This is field grid area and this one is field property.
Next is which symbol this indicate? It is a primary key. How many primary key we can set on a table? One. Yes. And if there is a, if we want to set the primary key on combinations, it is called composite key. It is called composite key. Dash is a shortcut key combination to save the database. Control plus S. Extension of access file .accdb. Dash are user-friendly interface that facilitate the process of no. Dash are user interface. These are forms. These are forms. Which option display the name of current database? Which option display the name of current database on which you are working? बेटा current database का name कहाँ पे display होता है? Title का. In title part. In which data type we can enter the data in? We can enter the Boolean data. Enter Boolean data. Boolean कैसे होता है? Yes or no. तो ये yes or no है, that is called, this is also called Boolean data type. ठीक है? Yes. ठीक है, जैसे हमने यहाँ से select किया yes no. It means if हमने टिक लगा दिया तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे टिक होगा. टिक लगाया तो yes, अनटिक है तो no. In which field data type you can enter 65,536 text? It is memo data type. In which data type we can enter 255 characters? It is a text. In which data type we can enter up to data up to 1 GB? It is hyperlinks. Yes, no, yes. केवल हमारा गलत हो गया ना, स्टैटिक
Next is आपने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। तो हियर इज रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 है ना, नीचे आ रहा है एट बॉटम, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ तो मेरे क्लिक करना पड़ेगा ना। शॉर्टकट की गो टू ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड और F5, मेरे को सीधे हाईलाइट हो गया नीचे, देखो हाईलाइट हुआ ना, टू की जगह टाइप कर दो 7 एंड देन प्रेस एंटर, पर रिकॉर्ड नंबर 7 इज नॉट हियर। The shortcut key to go to a specific record is Alt plus F5. Need chalk. Okay, students. Suppose in any feed data is not visible, ठीक है, तो इसका साइज बहुत कम है, या तो आप इसको रीसाइज करोगे इसको यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज इफ यू प्रेस शिफ्ट प्लस F2, आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस, तो जूम ऑप्शन विल बी देयर। तो जो भी करंट डाटा होगा, जो पोर्शन हिडन विजिबल नहीं होगा, वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू जूम, ठीक है, योर वैल्यू। तो अगर आपने वैल्यू जूम करके देखना है तो देयर इज ए शॉर्टकट की, और विच वन, शिफ्ट प्लस F2। Now in page number 44, there are some MCQs questions are there. Which key combination of cursor is used to go to the previous field? Shift plus tab. What is the maximum number of characters that can be 64? What do you call the area where you can view the record number you enter? It is record navigation bar. Which shortcut key combination is go to the specific record? Alt plus F5. Which of the key combination is used to save the changes and close the table? Control plus W. Which icon indicate the edit mode in Access?
पेंसिल, ठीक है। जब भी आपने पेंसिल मोड आएगा वहां पे इंडिकेट होगा कि यू आर गोइंग टू एडिट। नेक्स्ट इज पेज नंबर 54, which query allow addition, deletion, addition, updation and appending operation on data. It is which one? Action query. But in action query, data is saved in another table. Here data is not, they are not saying this new table. It is select query, ठीक है। अगर आपके पास न्यू टेबल हो ना, ठीक है, then you will use action query. Which query prompt you to input before it run? It is parameterized. It is parameter. यहाँ पे parameter लिखा हुआ है, parameter query. Which option is used to change the appearance and size of the various controls of a form? It is layout view. तो उसमें आप drag drop कर सकते हो. What does the top section of query window display? Selected a table. How many views does access provide to display a form? 3 views होता है. Next is which key defines the relationship between two tables? Okay, it is a primary key. So two tables में relationship primary key से बनती है. Now some questions from Photoshop. ये भी. Students, if you open the file, you open a new file, ठीक है? फाइल बना लो. Find me in file menu. Which options are there? Width, height, resolution, color mode, background. How many type of color mode? Bitmap, grayscale, RGB, CMYK, lab colors. Because that is used for printing purpose. So I created. Okay. Now in case this is a white area, is a canvas area. If I want to paste any picture, click on file. मतलब वो file open करेगा. Otherwise file, then place picture insert होगी इसमें. हाँ एक जो है देखो पिक्चर आ गई. अगर ओपन करती हो तो पिक्चर फाइल ओपन होगी. हाँ वो भी कर सकते हो. तो दिस इज कॉपी करके पेस्ट कह रहे हो बेटा, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. चेक करते हैं यहाँ पे. कॉपी.
ठीक है, ये भी हो गया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन प्लेस। हाँ, यू कैन अप्लाई। अदरवाइज देखो, पिक्चर इज ऑफ, इफ यू ओपन द पिक्चर इट इज ऑन द फुल कैनवस, पर यहाँ पे क्या हो रही है, पिक्चर सिर्फ लिमिटेड पोर्शन के ऊपर आई। नेक्स्ट इज, so these are the common question. First name of Photoshop software, ठीक है, in which year software, yes, these are the common questions. Who developed Photoshop? If you want to apply undo, shortcut key is or yes, yes. If more than one, please. कंट्रोल प्लस जी से तो एक ही टाइम में जाएगा ना, मल्टीपल प्रीवियस जाना है आपने, कंट्रोल यस। होता है बेटा, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड यहाँ में होना चाहिए था कंट्रोल प्लस 5, होगा अब यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने चेंजेस की नहीं ना। अगर आपने ये कर लो, कंट्रोल प्लस y इज नॉट एप्लीकेबल हियर, नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट होना चाहिए था यहाँ। ये टूल्स बेटा, देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो लिसन, softwares are of different type. Proprietary software, that are paid softwares, means if you pay the money you can use it, just like Photoshop. Some softwares are freeware, openly you can use it without any cost. Some softwares are shareware, that are for trial period. In during the trial period, some tools are available, some tools are not available. Yes, if you buy that software, then full version will be available. Otherwise, for a trial period, after trial periods, that software is not usable. Yes. Clear? वो shareware है trial period पे। अरे यहाँ पे तो देखो रीडू की हमारे पास है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी यहाँ पे लिख रहे हैं, पर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आपने एक बार चेक करके देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये देखो बेटा, एक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें से मैथ को रिमूव करना, और अगर आपने कोई और सिलेक्शन एरिया लेके आना है इसमें, ये देखो, इफ यू प्रेस शिफ्ट की, ये देखो सिलेक्शन कितनी डेकोरेटिव होगी ना। ये एडिशन के लिए आपने क्या करना है, प्रेस शिफ्ट की, ठीक है। हाँ यस, you will press, you will hold shift key, then make the selection, ठीक है। now the question is कि आपने इसमें से deselect करना है। if you press alt key, listen carefully, shift key is for adding, alt key is for subtracting। ये देखो, अब ये एरिया सिलेक्ट है, ये मैथ वाला बीच में सिलेक्टेड एरिया नहीं है। क्लियर? शॉर्टकट की फॉर डीसिलेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन इज ऑल्ट।
Alt plus D. Alt plus D यहाँ पे फर्क कर रहा है, Alt ही करेगा. Next is which key combination is deselect. Beta is not working. Oh. Control plus D करके देखते हैं इसको. ठीक है, ये सिलेक्शन इज देयर. कंट्रोल प्लस D तो हट गया, सिलेक्शन ही हट गई. That is for deselection. Control plus D is for deselection. But what I am saying, out of this selection, we want to deselect a little portion. Okay, that is a different thing. Now next is if I am using here lasso tool. Okay, ये lasso tool है. If I want to go to the I want to move these different tools. Which key is used? Yes, sir. Yeah, beta. देखो I use एक मिनट का. Paper beta, your shortcut keys are customized. In that case, it is not working. Otherwise, alt keys there. Okay, for shifting different lasso tools. Next is next is so if I am using magic band, okay, and after that, if you are using shift key, we can expand this. Okay, हमने shift key को press रखना है. Okay, in order to merge these selections. ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे selection merge नहीं हुई ना, ये click किया देखो यहाँ पे. Add हो रही, not reducing. ठीक है, ये देखना. ये लिमिटेड एरिया ना यहाँ पे सिलेक्शन का. इफ आई प्रेस शिफ्ट की, ये देखो और एरिया सिलेक्शन होगी ना, इंक्रीज हो रही है, मर्ज भी हो रही है सिलेक्शन साथ में. ठीक है, यू विल हैव टू होल्ड शिफ्ट की. नेक्स्ट इज व्हिच की शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर क्रॉपिंग. So this is shortcut key is C for cropping. ठीक है, for finalize the cropping, which key is used? मैंने cropping को final करना है, enter key. Good.
ये देख करके देख लेते हैं। अब बेटा शॉर्टकट की इज फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है बेटा। व्हेनेवर आई एम सेइंग इट, किसकी नहीं वो तो बेटा वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टेलिंग अबाउट द क्रॉपिंग, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा, बट डबल क्लिक इज नॉट ए शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की इज एंटर, you will have to press enter. Yes. Yes, online students, any doubt here? Yes, Karanveer. एक्सक्यूज मी सर। Yes, बच्चे। सर सर कमांड्स आएंगी, कमांड्स फॉर ब्रश टूल, कमांड्स फॉर पेंट बकेट टूल, ऐसे आएंगी? Yes, बच्चे, आ yes. सकते हैं? Yes. Okay, students, online students, thanks for attending the class. Now time is over. I am going to close the meeting. Take care. Bye, beta.